Good morning everyone. Welcome to Crack Grade B online learning platform and welcome to current affairs session. Can someone tell me whether my voice is clear and is this screen clearly visible to all of you? Good morning everyone. Okay. So we will be doing today 23rd to 25th March current affairs. Okay, 3 दिन का करते हैं, थोड़ा बैकलॉग कम हो जाएगा इसी बहाने. Okay, so let's move on and see what's the news are. So first news is with respect to the benefits of direct benefit transfer, and there is a report that have been released that tells you about what has been the benefit of utilizing DBT as a tool to disburse subsidies, and it's a very good report that you can utilize, especially in context of, let's say, use of technology in improving governance or use of technology to improve government finances also. Public finance में भी ये use हो सकती है, ठीक है? So if you see, transfer of subsidies and SOPs, standard operating procedure, that means utilizing DBT as a procedure for disbursing subsidies, resulted in gains of 63,700 crores in financial year 23 alone. और अगर आप 2015 से देखोगे, financial year 2015 से, so it approximately came out to be 3.5 trillion. So normally हम लोग, अगर आपको इंडियन मेट्रिक में देखना है, so basically it like 3.5 lakh crores, है ना? So this is a very important statistic that you need to remember. ठीक है, पब्लिक फाइनेंस में, यूनियन बजट में, in everywhere it can be utilized. 63,700 crores, it's a very huge amount. आप लोग देखो, मनरेगा के लिए पूरे साल भर के लिए अगर आपको let's say outlay देखना है, तो outlay is usually around 63,700 crores, 63,700 crores. Various schemes for the whole year only have such amount of outlays, और इतना आप एक साल में बचा पा रहे हो. So think about, you can you can also release one more scheme just by utilizing one technology. Think about the magnitude of what was the level of corruption with before DBT. और 2015 से देखेंगे 3.5 लाख करोड़ का सेविंग्स हम लोग कर लिए. एंड टू पुट इन पर्सपेक्टिव, इफ यू सी एंड इफ यू कंपेयर दिस होल अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हैज बीन द आउटले फॉर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम में 2 लाख करोड़ लगा रखे हैं, है ना? 2 लाख करोड़ से ज्यादा आपने केवल DBT में सेव कर लिया. So think about it. Okay, so these two statistics are very much important. Financial year 23 में 63,700 crores is your savings alone, and from financial year 15 to 23 you could save 3.5 trillion rupees. And apart from that, obviously there is more statistic with respect to how much amount of money that you could transfer via DBT in financial year 23, which is 7.16 trillion rupees, and in this financial year it is up to 5.3 trillion right now. It will closely be going towards 6 to 7 trillion in between. तो इस साल भी हम लोग 6 से 7 ट्रिलियन रुपीस DBT के थ्रू ऑलरेडी डिस्बर्स कर चुके हैं, एटलीस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, इफ वी टॉकिंग अबाउट. ओके, सो आई होप ये 2 स्टेटिस्टिक्स तो आपने याद कर ली. पहला है कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में अभी तक कितना हम लोग डिस्बर्स कर चुके हैं, विच इज 7.16 एंड 5.3 ट्रिलियन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ मच सेविंग्स कुड वी डू इन दिस फाइनेंशियल ईयर? 63,700 crores, and from the past let's say 8 years we could save around 3.5 trillion rupees. So that's what important, especially in ये सारा डेटा तो एटलीस्ट याद कर लेना, भले आपको ये इन बिटवीन डेटा याद रहे ना रहे. ओके, नाउ लेट्स एटलीस्ट सी, if not all the statistics, at least you know what
are the different type of activities that the government of India did, which helped in reduction of leakages. So if you can see, weeding out 50.3 million fake ration cards, say 1.86 trillion, 53% of that amount. Removal of fake beneficiaries, and even beneficiaries relinquish subsidies under Pehel scheme also helped in approximately saving this amount. Deletion of duplicate beneficiaries under MG Narega also yielded 42,000 crores, and removal of ineligible PM Kisan beneficiaries saved this much amount. So whenever a question comes to you that what does the government can do with respect to improving their finances, चाहे वो यूनियन बजट के कॉन्टेक्स्ट में आए, चाहे वो पब्लिक फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में आए, स्पेशली इन ESI, you all have these points to write. Especially एक broad heading अगर आप लोगे, rationalization of subsidies, improvement of disbursal of amount, and improving administrative machinery. तो उसमें आप लिख सकते हो using DBT is one thing, और आपके पास एग्जाम्पल भी है कि how much it will save you. Then you can also, DBT will help in removing fake ration cards. It helps in removing fake beneficiaries. It helps in removing duplicate beneficiaries. So this is a practice through which you can add various points in descriptive along with the data that is present over here. So is this clear to everyone? How to utilize this data? Not only from descriptive but objective के लिए भी याद कर लेना. Any confusion to anyone? Introduction, body, conclusion कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो इसको. Okay. So let's move on to the next. Inequality dipped over past decade as per the finance ministry, and they were actually talking especially in the context of World Inequality Lab report which we studied yesterday or day before yesterday. ठीक है, उस report के बाद, and the thing which finance ministry is saying that we have witnessed a decline in inequality, especially between the top and the bottom, and they are utilizing their household consumption expenditure data to back their claim. तो उन्होंने दो फाइंडिंग्स के बारे में बोला. उन्होंने बोला कि इफ यू लुक एट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द लोअर स्ट्रेटा, स्पेशली इन द इनकम टर्म्स, तो कंजम्पशन ग्रोथ ऑफ द लोवेस्ट 5% ऑफ द पॉपुलेशन outpaces the top 5% in both rural and urban areas. ठीक है, तो जो टॉप 5% पीपल है उनके कंजम्पशन पैटर्न का ग्रोथ रेट लोवेस्ट वालों से कम है. सो दिस इज अ साइन कि रूरल के पास पैसा है तभी तो कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, और पैसा है, दैट मीन्स द गैप बिटवीन बोथ द टॉप एंड बॉटम इज रिड्यूसिंग. सो दैट्स व्हाट देयर क्लेम इज. Another thing which they are suggesting is that we are witnessing inclusive economic growth. And when we say inclusive economic growth, what does we actually mean? अगर आप बजट को context, this interim budget, if you take it in context, what type of inclusivity are we thinking about? Anyone? Reaching the last mile, geographical, social, correct. ठीक है, तो not only obviously every section of society should have equal growth or equitable growth, but also every region in the country also witness equitable growth. So region के basis पे let's ignore right now, ठीक है, because the household consumption expenditure data primarily talk about the income criteria. ठीक है, और obviously rural urban तो है ही. So what does this population divided by per capita income ratio shows? It shows an increase across all consumption classes except the top 5% in rural and even urban India.
तो बेसिकली जो टॉप 5% इन रूरल इंडिया एंड टॉप 10% इन अर्बन इंडिया, ठीक है, दीज पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग अ लॉट एज कंपेयर टू एवरी अदर strata below them. So that's why the finance ministry is claiming that we are, witnessing inclusive growth. Also, the inequality between the top and the bottom is declining. ठीक है, ये दो claims है which anyways you can utilize as a counterpoint, especially in inequality question if it comes, और inclusive growth में तो आ जाएगा तो फिर वैसे भी आ जाएगा, है ना. जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने आर्ग्यूमेंट दे रही है, आप लोग भी ये आर्ग्यूमेंट देके ये डेटा प्रोवाइड करा सकते हो. सो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन यूटिलाइज इट इन डिस्क्रिप्टिव. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो, now let's move on to next, which is water level in more than half of India's major reservoirs is below 40%. जितने भी अपने रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हैं, ठीक है, अगर उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इफ यू लुक एट इट, वी आर हैविंग वाटर ओनली अप टू 40% ऑफ देयर कैपेसिटी. दिस इज अ वार्निंग साइन, especially in the context of Bangalore crisis that we've already witnessed. How many of you are aware of water crisis happening in Bangalore? है ना, तो बैंगलोर में वाटर क्राइसिस हो रहा है, एंड ऑब्वियसली एज ऑल द सदर्न रिवर्स आर नॉट पेरेनियल, ठीक है, उसमें कंटिन्यूसली वाटर तो आता नहीं है. रेनफॉल वाटर इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम, एंड रिजर्वायर्स प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल इन सदर्न्स, स्पेशली इरिगेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. तो अगर वहां पर पानी कम है तो this will naturally impact not only agriculture but also various social aspects too. So this is a report by Central Water Commission which says that all the major reservoirs have water levels below 40% of their capacity. This is a very huge thing. आप लोग इसको utilize करोगे environment में, ठीक है. अब environment में कैसे utilize करेंगे इस चीज को? Can anyone tell? How to utilize this in environment? इसको environment से relate करो ना. What are the probable reasons because of which the water levels have declined? Global warming, yes. ठीक है, अब देखो ऐसा है ना कि आपको हर एक चीज को रिलेट करना आना चाहिए, then only you can interlink various concepts. Responsible consumption, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन अगर आपने बोला है तो यू ऑल्सो कैन रिलेट इट विद SDG ऑल्सो, है ना. SDG अपना एक है, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. प्राइमरीली यू कैन रिलेट इट विद द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज द फिनोमिना लाइक एल नीनो हैव इंक्रीज्ड इन फ्रीक्वेंसी विच लेड टू रिडक्शन इन रेनफॉल, and when the rainfall is reduced the reservoirs water levels are also reduced. So this is one thing that you can write, ठीक है. एंड ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कोट अनसस्टेनेबल यूसेज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. यू कैन ऑल्सो कोट पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन इन सिटीज, एंडिंग वेरियस natural lakes and reservoirs that increases or that put pressure on the water use of such type of reservoirs, major reservoirs पे. अगर शहर के जो अंदर के तालाब हैं उन सबको आप सड़ा दोगे तो फिर इसी पर आएगा सबसे ज़्यादा प्रेशर इन टर्म्स ऑफ यूसेज. बैंगलोर में कितने लेक्स हैं, बट सारे लेक्स सही हैं. अगर सारे लेक सही होते तो इन सब की ज़रूरत पड़ती, और ये इट्स अ विशियस साइकिल. व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ लेक्स and when the normal orographic rainfall, it also helps in orographic rainfall basically. तो पानी अवेलेबल है तो धूप आएगी, ठीक है, वाटर गेट्स evaporated, रेनफॉल आएगी, एंड इट्स अ virtuous cycle. But when you remove the lakes either via pollution or either via exploitation, तो फिर वो cycle becomes vicious. तो फिर आप वहां से यूज नहीं कर सकते, फिर आप कावेरी वाटर के पास जाओगे, so it puts a more pressure. And it's not good even from social angle, even from political angle also, because then you fight for water. So it's better to adopt
lifestyle that the Prime Minister is vouching for, which is to be sustainable in its usage. So this is with respect to what's the capacity is there, and the reason that is being attributed is patchy rainfall attributed to El Nino phenomena. El Nino is nothing but unusual warming of ocean water in ईस्टर्न पैसिफिक ओशन. अब उससे होता क्या, बस आप ये याद कर लीजिए, जब भी एल नीनो आता है तो इंडिया में मॉनसून का इंटेंसिटी गेट्स रिड्यूस्ड, तो रेनफॉल कम होती है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस इंप्रूव्स, है ना. ऑल दीज रीजंस लेड टू water being at this level 67.591 billion cubic meters. It represents 38% of total live storage capacity, which is very low. Okay. Next is Food Machinery Corporation India launches precision agri platform called ARC Farm Intelligence. Okay. It's a precision agriculture platform in India, one-stop solution for farmers and available in 6 languages. तो precision agriculture क्या होता है? Basically utilizing technology, high precision technology, sensors लगा के to manage what is the situation within the farm with respect to moisture, with respect to availability of fertilizers, pesticides, कितना ज़रूरत है, हर एक चीज़ आपको डेटा के फॉर्म में मिलेगी, so that you can take much more precise decisions with respect to how much to use resources. It allows farmers to optimize their resources. फिर जितना ज़रूरत है उतना ही पानी की ज़रूरत लगेगी, है ना. So this is what precision agriculture is. Yes, obviously more advanced than soil health card scheme. Soil health card के लिए आप soil test करवाने भेजोगे. Precision agriculture में क्या करोगे, आप sensors लगा दोगे, ठीक है, and then sensors will give you the data on real time basis, through which you can take decisions with respect to that. But obviously this is not sustainable, especially in context of small and marginal farmers. Large farmers के लिए sustainable हो जाता है because they can afford it right now when the level of precision agriculture or the equipments of those precision agriculture is not readily available. ठीक है, ड्रोन तो हम धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं, आप precision agriculture की क्या बात कर रहे हो, ठीक है. And we need to have that ecosystem inbuilt, then only these things can be deployed in the agriculture. ठीक है, जैसे ड्रोन दीदी वाला एक इकोसिस्टम बनाया हम लोगों ने. थ्रू ड्रोन दीदी वी कैन प्रोवाइड लाइवलीहुड टू SHGs एंड और उसके साथ साथ दिस वी ऑल्सो इंक्रीजेज द अडॉप्शन ऑफ ड्रोन इन द एग्रीकल्चर ऑल्सो, है ना. सो सच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज एसेंशियल टू बी बिल्ट so as to increase their adoptions. Next is Reserve Bank of India Omnibus finalizes framework for self-regulatory organization in regulatory entities. So if you clearly understand the MPC meeting में केवल वो गवर्नर रेपो रेट के बारे में नहीं बताते और केवल प्रोजेक्शंस के बारे में नहीं बताते. दे ऑल्सो हैव अ डिफरेंट मीटिंग कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स एंड ऑल दोस थिंग्स. उसमें फिर वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और मोस्टली क्वेश्चंस भी वहीं से आते हैं. तो दैट्स व्हाई फॉर समबडी वाज आस्किंग कि हम पुरानी एमपीसी भी कोर्स में क्यों रखे हुए हैं, इसीलिए रखे हुए हैं. अगर आप देखोगे, इफ यू लुक एट इट, दिस इनिशिएटिव वाज मेंशन्ड इन एमपीसी वे बैक इन December 2023 या फिर अक्टूबर वाले में आया हुआ था ये, है ना. सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. So at that particular point of time, RBI governor says that we are finalizing a framework to be created so that self-regulatory organization within the subsector of all the regulated entities can be established. तो basically हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हर एक सेक्टर, be it fintech sector, be it banking sector, be it microfinance sector, be it small finance bank sector, हर एक सेक्टर में एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो आपस में ही बन जाए, ठीक है. सो दैट दे बेसिक मिनिमम रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर. आरबीआई को हर एक चीज़ ना करने पड़े. तो बेसिकली अगर ये स्ट्रक्चर है रेगुलेशन का, इफ राइट नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर with respect to regulation, that RBI is also regulating various banks, public sector banks, private sector banks, okay, small finance banks,
पेटीएम, पेमेंट बैंक्स, फिनटेक कंपनीज, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फिनटेक कंपनीज, ठीक है। फिर वी हैव पेमेंट एग्रीगेटर्स, अकाउंट एग्रीगेटर्स एज ऑल्सो, ठीक है। अभी आरबीआई सबको करती है, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, बट ऑब्वियसली for a one institution it becomes a lot more difficult when the entities are increasing, but apart from that when the technology is incorporated, so technological expertise भी ना चाहिए। अब वो सब चीजें कर ले, ठीक है, but everything takes time, so what if we can have one self-regulatory organization that can manage these two entities, फिर एक self regulatory organization that can manage payment banks and payment aggregators, another self regulatory organization that can manage fintech companies और small finance bank। तो आरबीआई को केवल इन तीनों से बात करनी पड़ेगी, so it reduces their responsibilities and it also even optimizes the regulation practice, so this will help them। so these self regulatory organization, ठीक है, ये यही लोग बनाएंगे और उनकी क्या बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शनैलिटीज होंगी वो सारा उस फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है, विच अगेन वी विल कवर इन आरबीआई सर्कुलर्स, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी थोड़ा देख लो इस चीज को, बाकी सर्कुलर्स में तो एनीवेज वी विल गो इन डेप्थ। सो इज दिस क्लियर व्हाट एसआरओ इज और व्हाट आरबीआई इज ट्राइंग टू डू विद रिस्पेक्ट टू इट? चलो नेक्स्ट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रूव्स बीमा सुगम ई मार्केट प्लेस अमंग 8 रेगुलेशंस अदर देन दैट, ठीक है। तो आईआरडीए एक साथ मीटिंग में बैठे, उन्होंने 7-8 रेगुलेशंस निकाल दिए। क्या क्या निकाल दिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं एक बार। So they have approved 8 regulations covering various crucial aspects। पहली चीज क्या करी उन्होंने, improving compliance और improving और optimizing the legal aspects। 34 regulations को उन्होंने 6 regulations में convert कर दिया और 2 new regulations बनाए। Next is they have approved Bima Sugam e-marketplace। So it's like a what they are saying is that it will be like a digital public infrastructure that aims to achieve or that aims to help IRDA to achieve insurance for all by 2047, which is their primary goal। ठीक है, कैसे करेंगे बात अलग है, लेकिन ये प्राइमरी एम है, ठीक है। और बीमा सुगम इट्स लाइक ई मार्केट प्लेस, जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, वहाँ पर आपको सारे कमोडिटीज मिल जाते हैं। सिमिलरली थिंक अबाउट अ इंश्योरेंस वेबसाइट, ठीक है, वेयर यू कैन गेट एवरीथिंग, whether it's an insurance policies or whether it's a other different type of solutions that the insurance companies also provide। वहीं पे claim settlement वगैरह सब कर सकते हो। think about policy बाजार, but ये थोड़ा government वाला है। okay, any confusion in Bima Sugam to anyone? ठीक है, इट्स लाइक एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेयर इंश्योरेंस कंपनीज कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स, ऑनबोर्ड ऑल कंपनीज फ्रॉम बाइंग इंश्योरेंस टू रिन्यूएबल्स टू क्लेम सेटलमेंट टू पोर्टेबिलिटी, एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, देन वी हैव रूरल सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन। तो जस्ट लाइक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज देयर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग, जहाँ पे हर एक बैंक को एक परसेंटेज अमाउंट लोन्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, स्पेशली इन वेरियस सेक्टर दैट आर कंसिडर्ड प्रायोरिटी। व्हाट इज द नॉर्मल परसेंटेज? अगर ब्रॉड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो पीएसएल में कितना रहता है? 40%, यस करेक्ट। तो सिमिलरली even insurance companies also have regulations with respect to or obligations with respect to rural and social sector। तो उनका क्या रहता है कि they have defined a rural sector, they have defined a social sector। तो उसमें उन्होंने
इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचनी होती है. बट द चेंज विच IRDA हैज डन रिसेंटली is that they have designated ग्राम पंचायत as the new unit of measurement for insurance rural obligation. तो जब रूरल सेक्टर बनाते हैं तो पहले just before this the rural sector comprised of what the rural area meant by census 2011. Census 2011 में जो rural area की definition थी that was considered as the rural area under this obligations. But now ग्राम पंचायत will be the unit of measurement. पहले रूरल एरिया के हिसाब से मेजर करते थे कि आपने कुछ काम किया कि नहीं किया, बट अब ग्राम पंचायत के हिसाब से आपके टारगेट बनेंगे कि कितनी ग्राम पंचायत में आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अनदर थिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल सेक्टर कार्ड होल्डर्स हैव बीन इंक्लूडेड. तो सोशल सेक्टर की डेफिनेशन अपनी होती है. ठीक है, उस डेफिनेशन में कार्ड होल्डर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है. कार्ड होल्डर्स मीन वेरियस स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, दे प्रोवाइड वेरियस कार्ड्स विद रिस्पेक्ट टू यूसेज ऑफ दोस स्कीम्स. फॉर एग्जांपल MG नरेगा कार्ड एक प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, आयुष्मान भारत का कार्ड रहता है, राशन कार्ड रहता है, ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, एंड ऑल दोज पीपल विल बी इंक्लूडेड इन सोशल सेक्टर. तो अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी विद इन सोशल सेक्टर का जो आपका ऑब्लिगेशन है, इफ यू कैन प्रोवाइड टू दीज बेनिफिशियरीज देन ऑल्सो योर ऑब्लिगेशन विल बी फुलफिल्ड. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट IRDA टॉक्ड अबाउट. नेक्स्ट इज SEBI डायरेक्टिव ऑन ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इनफ्लोज. तो बेसिकली इसको ऐसे देख लेना. बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं? आप म्यूचुअल फंड्स में क्या करते हो, आप पैसा लगाते हो. ठीक है, फिर वो फंड मैनेजर बैठ के आपके पैसे से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, फिर उसमें जितनी कमाई करता है फिर आपको डिप्लॉय कर देता है. सो दैट्स अ वे दैट म्यूचुअल फंड वर्क्स. बट व्हाट हैपेंस इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक फंड बेसिकली बनता है. ठीक है, उसमें अलग अलग कंपनीज होती हैं एंड बेस्ड ऑन दीज वैल्यू ऑफ दीज कंपनीज द वैल्यू ऑफ दिस ETF गेट्स डिटरमाइंड. और सबसे अच्छी बात म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो तो आप एक फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हो. यहां अगर आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद रहे हो तो यू गेट लाइक अ सम पोर्शन ऑफ दिस फंड विच इज ऑल्सो लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. एंड यू गेट टू reap the benefits of all these companies that are already in this exchange traded fund. ठीक है, और जो आप म्यूचुअल फंड में करते हो वहाँ तो फंड मैनेजर बैठता है, वो फंड कोई एक्सचेंज दिस किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट तो होता नहीं है, अनलाइक ETF. ओके, सो सच टाइप ऑफ ETF नॉट ओनली एग्जिस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो एग्जिस्ट इन ओवरसीज. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को अमेरिका की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है बट आई डोंट नो अबाउट वेरियस कंपनीज, आई डोंट वॉन्ट टू इवन डू सो बिकॉज टाइम नहीं है मेरे पास, तो व्हाट शुड आई डू, आई विल गो and I will buy a ETF. I will buy a ETF, ठीक है, which includes various top companies of, in USA, for example, Apple, Google, Tesla, Facebook, Microsoft. ठीक है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है. अब आप डायरेक्टली तो एक्सेस कर नहीं सकते. ठीक है, तो what do? You pick a mutual fund. I am an investor. I pick a mutual fund which invest in overseas ETF. है ना? ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है टू इन्वेस्ट इन दीज ओवरसीज ETF. यहाँ से जितना बेनिफिट आता है वो मेरे को मिल जाता है. ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग होंगे. ठीक है, और ऐसी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होंगे. तो अगर आप इन सारे म्यूचुअल फंड्स का कलेक्टिवली एसेट अंडर मैनेजमेंट देखोगे, स्पेशली फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन ओवरसीज ETF, अभी तक का इट इज अराउंड $953 million.
इंडिया के जितने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने ओवरसीज ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, इतना पैसा लगा हुआ है। तो सेबी क्यों बात कर रहा है? सेबी बात इसलिए कर रहा है बिकॉज आरबीआई हैज अ लिमिट ऑफ $7 billion for all overseas investment. When I'm talking about all overseas investment, it includes everything: stocks, bonds, even ETFs. Or especially if you talk about ETF overseas, there is a limit of $1 billion. 1 billion से ज़्यादा is not allowed to be invested in overseas ETF. और हम लोग कहाँ पहुँच गए? Almost close to 1 billion. So that's why SEBI is saying कि ब्रेक पर, ब्रेक पेडल पर पैर रख दो, जरूरी है, ठीक है? So that's what the news is within this context only. SEBI has instructed mutual fund houses to halt acceptance of further inflows in schemes investing in overseas exchange traded funds. From April 1st, 2024, this directive come as inflows in these overseas ETFs approach the mandated investment limit of $1 billion. ठीक है? Current status, we are close to $950 million. Implementation will start from April 1st. Overall limit with respect to every investment outside is $7 billion by Reserve Bank of India. किसी को कोई कंफ्यूजन? और ऑब्वियसली इंडस्ट्री कह रही है कि यार इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, आप लिमिट भी बढ़ाओ, ऐसा थोड़ा चलता है, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं और बहुत सारे लोग जब पैसा देने को तैयार है तो आप क्यों नहीं लिमिट इंक्रीज कर रहे हो? एनी कंफ्यूजन टू एनीवन इन दिस न्यूज़? चलो, let's move on to next. So this is more like a national news, ठीक है, और sectoral news है कि for the first time we have achieved the milestone of producing 1 billion tons of coal and lignite. ठीक है, so this is which you can utilize to showcase India's growth. Not India की growth आपको बताने के लिए केवल finance की news ही नहीं, आप इस तरीके की न्यूज़ भी कोट कर सकते हो. नेक्स्ट इज अ लैंडसेट रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज फॉलिंग फर्टिलिटी रेट. पहले पॉपुलेशन रोकने की दिक्कत थी, अब पॉपुलेशन बढ़ाने की दिक्कत हो जाएगी थोड़े दिनों बाद. इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट प्रोजेक्टेड टू डिक्रीज टू 1.29. Approximately केवल 1.29 birth will be happening. Okay, और replacement rate क्या होती है? 2.1. Historically, this has been declining from 6.18 in 1952 to 4.6 in 1980 to 1.91 in 2021. ठीक है, even it's not a phenomena that is happening right now. Globally also, if you see 76% of the countries are below replacement level and theirs will be rising to 97% by 2100. तो 2100 में almost 97% countries will be having their population growth declining. यस इंदिया जी, हमारा यूट्यूब चैनल सफिशिएंट है. नेक्स्ट है रिवैम्पिंग करेंसी लॉजिस्टिक्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.
So this is important because RBI has been doing some changes with respect to currency management, okay, which is the core aspect of Reserve Bank of India. So that's why it's important to learn about various statistics in this phenomenon. So they have actually reviewed the current logistics and they have improved that. Okay, so in this context, they have implemented a new currency logistics framework to enhance its currency management. It includes revamping storage units, leading to decline in number of currency chest and coin depot. So infrastructure upgradation में we have this data. Currency chest reduces to 2838 in financial year 23. Currency depot increased or decreased from 3500 to 2300 almost. If you see currency management, this is a very important statistics. एग्जाम में पूछ सकते हैं कि RBI manages currency issuance and circulation through how many issue offices and small coins? Through 19 issue offices, currency chest and small coin depot. State Bank of India holds the highest share of currency chests. ठीक है, और बैंक नोट which is in circulation सबसे ज्यादा कौन सा है? Obviously 500 rupee note in terms of volume. 2000 का तो वापस जा चुका है. So naturally this also will be the highest in terms of not only volume but also in terms of value as well. Another thing which Reserve Bank of India is thinking in context of coin dispersal, वो कह रहे हैं कि एक QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन भी हम लोग निकालेंगे, जिससे आप QR से स्कैन करो, अपना पेमेंट करो, ठीक है, और फिर उसके बेसिस पर आपको कॉइन जनरेट हो जाएंगे. और बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है. मान लीजिए कभी कुछ लेट्स से त्योहार चल रहा है, आपने बांटने हैं कॉइन्स, इट बिकम्स ईजियर. This will become easier. Next is India's shift from minimum wage to living wage. So India is planning to transition from minimum wage to living wage. अभी minimum wage का concept है, ठीक है, that minimum wage, as all of you know, that we are talking in context of absolute poverty. तो absolute poverty कैसे define करते हैं हम लोग कि the basic thing for survival of a particular person, अगर वो सब चीज़ें भी नहीं है then we call it absolute poverty. ठीक है. So similarly, basic essential aspect for ensuring survival of a particular person, वो सब खर्च करने के लिए जितना पैसा होता है, that is what you call minimum wage. Okay. But living wage is a little bit higher than that. Living wage ensures that you at least have amount for consuming those amount of essential goods that ensures that you are living a decent life. ठीक है, एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए आपका. ठीक है, ये नहीं कि केवल खाने के चक्कर में आप लाइन में खड़े हो. ठीक है, आपके पास इतना पैसा हो कि आप नॉर्मल जो बहुत बेसिक चीज़ हर आपके पास घर हो, ठीक है, चाहे वो स्कीम्स के थ्रू मिले या जैसे भी मिले, वो सारी चीज़ आपको लिविंग वेज के अंडर आ जाता है. कवर्स बेसिक एक्सपेंसेस लाइक हाउसिंग, फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लोथिंग, एमिंग टू इंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बट मिनिमम वेज में क्या आता है कि क्या कहते हैं, लेबर प्रोडक्टिविटी और स्किल सेट के हिसाब से जितना दे सकते हैं मिनिमम आपको उस बेसिस पे. जस्ट लाइक इन यूएस कितना है, $11 का है पर घंटे, समथिंग लाइक दैट. And if you see what's the current national wage floor is 176 per day. It has not been revised since 2017. When the code of wages was passed, it talked about a binding wage floor applicable to all states. ठीक है, क्योंकि हर एक स्टेट में अपनी अपनी मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है. बट इफ थ्रू कोड ऑन वेजेस अगर हम लोग एक बाइंडिंग फ्लोर वेज लगा सकें, ठीक है, दिस विल oblige every state to always put their minimum wage just above it, या कम से कम इतना तो रखें. ठीक है, and ILO also says that we will be talking about this reform in 350th governing body meeting in Geneva.
नेक्स्ट इज LIC emerges as strongest insurance brand. ठीक है, जैसे कि कोई डाउट था किसी को, इंडिया में इससे बड़ा ब्रांड कौन है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस. This is the report by Brand Finance Insurance 100 2024. And why it's a brand strength? Brand value remains steady at $9.8 billion, accompanied by a brand strength index score of 88.3 and having AAA brand strength rating. Last, in ESI, RBI penalizes Nashik Cooperative Bank, okay, for non-compliance with regulations. 60 लाख का इन पे जुर्माना लगा है. If you see national news, so world's first compressed natural gas two-wheeler or motorcycle will be developed by Bajaj Auto, says its managing director. जून में हम लोग निकाल देंगे, so that's a good thing. ठीक है, world's first है, so it's important for us to remember the company that is manufacturing this. Next is Mumbai overtakes Beijing as Asia's billionaire hub. अगर आप इंडिया के बिलियनियर काउंट करोगे तो हम लोगों के पास 271 बिलियनियर्स हैं, एंड दिस इज एज पर हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024. Okay, so in this context, if you see, recently 100 billion new billionaires have been added in the list. पहले around 171 थे, अब 271 हो गए, while China saw a decline in number of billionaires by around roughly 155. So that makes the Mumbai ahead of Beijing. Okay, rising in billionaire obviously counts reflects in economic confidence. If you see the global wealth map, New Delhi enters the top 10 cities for billionaires. Reliance industry chairman secures 10th position among global elite. Top always is Elon Musk, and then we have new entrant like Facebook founder and Google founder. ठीक है, Taylor Swift भी पहुंच गई है. Top cities with billionaires: New York, London, Mumbai, Beijing, Shanghai. Top nations: China, US, India. यही दिखेंगे आपको हर जगह टॉप 3 में. Top global billionaires already discussed. India's economic growth, adding almost 100 new billionaires, whereas Mumbai being Asia's billionaire capital right of as of now. This is a good feat, but this is a huge feat for us. ठीक है, कि overall Asia में we have a new capital in context of number of billionaires. Next is Russia offers Arctic route as an alternative to Suez Canal. ठीक है, अब देखो क्लाइमेट चेंज के फायदे कितने हैं. आपको पता है कि ट्रेड की बातें ये क्यों कर रहे हैं. नेचुरली अर्थ पर यहाँ पे तो ठंडी होनी चाहिए और यहाँ पे तो ऐसी हालत होनी चाहिए कि किसी का मूवमेंट ही बंद हो जाए, है ना. बट क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है, जितनी भी आइस है इसको रिमूव करे जा रहा है. ऑब्वियसली पूरी रिमूव नहीं कर देगा, जस्ट लाइक व्हाट आई हैव डन. ठीक है, अगर इसको आप इंस्टेड ऑफ इन दिस व्यू, अगर आप टॉप व्यू देखोगे इसका, सो दिस इज लाइक रशिया, है ना. फिर यूएस आ गया, कनाडा, और फिर कुछ यूरोपियन नेशंस, और ये रहा आपका आर्कटिक शेल्फ. सो प्रीवियसली व्हेन द आर्कटिक शेल्फ वाज हैविंग होल अमाउंट ऑफ आइस, ठीक है, तब तो यहाँ पे कोई मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है फॉर एनी ट्रेड. सो दैट्स व्हाई दे वांटेड टू गो वाया सुएज कैनाल. सारा जितना भी रशिया का ट्रेड अगर यूरोप जाना है तो फिर वो वैसे जाएगा. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग. But because of COVID-19, because of climate change, this ice is melting, thus enabling movement of goods directly to Europe from Russia, directly to USA from Russia, directly to Canada from Russia. So that's why उन्होंने कहा कि सुएज कैनाल को छोड़ो, यहाँ आ जाओ
आपको दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको फिर मेडिटेरेनियन से क्रॉस करके ले जाओगे, बेटर है यहीं से डायरेक्टली पहुंचा दो, क्या दिक्कत है। चाइना भी ले जाना है तो आप मेरे को पहुंचाओ, फिर मैं साइड में चाइना को पहुंचवा दूंगा, वो भी पास है। सो दैट्स व्हाट द रशिया इज थिंकिंग अबाउट। दिस रूट विल बी नॉर्दर्न सी रूट। So is this clear to everyone कि what Russia is planning to do? किसी को कोई डाउट? Next is world's first Dragon Ball theme park to be built in Saudi Arabia. So how many of you are fan of Dragon Ball Z? So for all of you guys, क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। देन इंडिया टू डबल असिस्टेंस टू भूटान टू 10,000 crores, ठीक है, दैट्स व्हाट वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज विजिट टू थिम्पू। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MOUs, so India Bhutan ink various MOUs, but the most important MOUs includes a rail link from Kokrajhar to Galepu rail link and Banarhat to Samtse rail link. 2 rail links will be established between India and Bhutan. नाम याद करके रखिएगा, it's very important. India और neighborhood countries के साथ whatever infrastructure projects that are going on, you need to remember anyhow. Next MOU is between Central Bureau of Investigation and European Police, ठीक है, also known as Europol. They have signed a working arrangement. With respect to space, so the station Shiv Shakti, Chandrayaan 3 landing point, okay, where the Prime Minister gave it a name called Shiv Shakti, ठीक है, अब उसको international recognition भी मिल चुका है via International Astronomical Union. So this is important, the organization to internationally recognize the name of that point, International Astronomical Union. Next is Pushpak reusable launch vehicle successfully tested. So recently ISRO conducted this RLV mission, okay, where via Chinook helicopter they actually, took this reusable launch vehicle to a particular height, 4.5 किलोमीटर उन्होंने वहां से छोड़ दिया उसको, फिर उसकी ऑटोनॉमस लैंडिंग हैज बीन सक्सेसफुली रीच्ड, ठीक है, इसका नाम क्या है, पुष्पक। सो प्लीज रिमेंबर दिस, इट हैपेंड इन एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रदुर्ग इन कर्नाटका। नेक्स्ट, फर्स्ट पिग टू ह्यूमन किडनी ट्रांसप्लांट परफॉर्म्ड इन यूएसए। तो बेसिकली क्या करते हैं, पिग के अंदर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी प्रोड्यूस करते हैं सो दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर ट्रांसप्लांट इन अ ह्यूमन। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ह्यूमन के जैसे रहता है। सो दिस इज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड इन यूएसए। द institution is Massachusetts General Hospital in Boston. First ever nuclear energy summit happened in Brussels, capital of Belgium. So in that context, everybody is focusing upon utilizing nuclear energy as an alternative energy, especially in context of fossil fuels. तो basically क्या करेंगे, to promote nuclear energy because of various incidents like Chernobyl nuclear disaster, nuclear energy got taboo, ठीक है, but अब fossil fuels का decline हो रहा है, so everybody wants to increase the usage of nuclear power plants. So it is in this context only they have conducted this first ever nuclear energy summit. So it's important that you remember the place where it happened, also who was the chair, Belgium Prime Minister and International Atomic Energy Agency. Okay, even the UN Climate Change Conference also emphasized the same thing, that we need nuclear energy. If you talk about Indian context, so India's first commercial nuclear power plant is in Pahalgad, Tarapur. It offers reliable energy at 2 rupees per kilowatt hour.
that is even lower than the solar power tariff. तो why would you not want nuclear power? और न्यूक्लियर पावर के लिए बेसिकली सिंपल सा है कि टैबू इज देयर कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहीं रहेगा तो डिजास्टर होगा और उसकी वजह से इट विल पुट डेंजर टू ह्यूमन लाइफ. सो दैट्स व्हाई फिर हर कोई अडॉप्ट नहीं करता है इसको. देन वी ऑल्सो हैव अनदर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन कुडानकुलम विच ऑल्सो ऑफर्स रिलायबल एनर्जी. बट मेन थिंग इज कि in India's energy matrix, nuclear power plant is still at very low. If you see, 1.6% to even India's renewable energy mix. ठीक है, ओवरऑल एनर्जी मिक्स करोगे तो और कम हो जाएगा. इंडिया की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में अगर ये 1.6% है तो ओवरऑल में सोचो कितना कम होगा. बिकॉज स्टिल इवन टिल नाउ विच इज द resource through which or which accounts for the maximum percentage in India's energy mix? Can anyone tell? सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हम लोग किस रिसोर्स के थ्रू करते हैं? Yes, coal. Correct. Okay, so that's why this is an important statistics for you if you want to showcase the potential of nuclear energy. ठीक है, आपको हमेशा इसको यूटिलाइज करने के लिए बहुत स्पेस है व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट इट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज. सो दिस इज अ टेनिस न्यूज विद रिस्पेक्ट टू टूर्नामेंट हैपनिंग इन मुर्सिया, स्पेन, also known as Challengers tennis event. Okay, in that event our players actually got defeated by French players in the final match. Arjun Kade and Jeevan got defeated by Theo and Victor of France. Next is G Sathya becomes first Indian to win World Table Tennis feeder title. Very important news. First Indian to win World Table Tennis feeder title. G Sathya in Beirut, Lebanon. ठीक है. He defeated compatriot Manav Thakkar. तो कोई भी जीतता, it would have been better. Next is Mary Kom named chef de mission or chief de mission. Okay, for Paris Olympics. शेफ डे मिशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? द पर्सन हु इज लीडिंग द होल स्पोर्ट्स टीम गोइंग फॉर एन इंटरनेशनल इवेंट. सो मैरी कॉम इज शेफ डे मिशन दिस टाइम एंड शरद कमल selected as flag bearer for the opening ceremony. Such type of news are hugely important when you're preparing for any banking related or regulatory body examination. यही सब क्वेश्चन पूछते हैं और क्या पूछेंगे. Appointment Naveen Jindal elected president of Indian Steel Association. Naveen Jindal is also chairman of Jindal Steel and Power. So 21st March World Down Syndrome Day, theme being End the Stereotypes. 22nd March World Water Day, theme being Water for Peace, leveraging water for peace. 23rd March World Meteorological Day, theme being at the front line of climate action. And World Tuberculosis Day, theme being yes we can end TB. ठीक है. So this is the news with respect to 23rd, 24th, 25th. If anyone have any question, feel free to ask. Otherwise, we'll wind up this session. And this is March 24 only, World Tuberculosis. ठीक है. 24th March. किसी को डाउट तो पूछ लो, अदरवाइज विल वाइंड अप दिस सेशन. इट क्रिएट्स बैकलॉग. हाउ? 2 क्लासेस होती हैं बैकलॉग को रिमूव करने के लिए.
बैकलॉग कैसे हो जाएगा? यस एनाकिन, फॉर IBPS एंड SBI ऑल्सो दीज आर इनफ. राजीव, अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे ना तो फिर वो ओवरऑल बैकलॉग हो जाएगा. So what you can do if you are not able to see the classes, you can read the PDF. ठीक है, चलो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग. विल मीट इन द डाउट सेशन. ठीक है, वहाँ मिलते हैं.